There are a few words जिनके साथ possessive नहीं लगता. Possessive case means your, his, her, my, their, our, its. ये possessives नहीं लगते हैं कुछ words के साथ, और ये words हैं separation, excuse, mention, favor, pardon, leave, report, cite, right? And they do not take the possessive case. For example, your separation, I could not bear your separation, is wrong. The word would be separation from you. I could not bear separation from you, right? Again, see this example. I want your favor. So I want a favor from you is correct. Your favor galat hai, right? His mention in the story is wrong. See another example. Separation from you pains me a lot, right? This is correct. I want your favor is wrong. I want a favor from you is correct. So these are the words which will not take the possessive case. हम possessive case यानी your, his, her, my, their, our, its, ये सब इनके साथ नहीं लगाएंगे, right? Come to the next rule, which tells us about each other, one another. राइट. ईच अदर कहाँ यूज़ होता है और वन अनदर कहाँ यूज़ होता है? ईच अदर ओनली टू पीपल के लिए यूज़ होगा. सिर्फ दो लोगों की बात जब भी हम कर रहे हैं तो हम लगेंगे ईच अदर. And whenever we are talking about more than two people, it would be one another. For example, all citizens should love each other. Wrong है क्योंकि यहाँ पे citizens बहुत सारे हैं. अगर दो होते तो each other आता है, right? All citizens should love one another. Next देखिए, see another example. A and B helped each other. क्योंकि A and B are two people, so each other is okay. We sent Diwali gifts to one another. मतलब बहुत सारे लोग हैं और उन्होंने एक दूसरे को बहुत सारे gifts भेजे, so one another would be here. I hope this is very clear to you. Come to the next rule that says about adverbs. There are a few adverbs. Seldom, little. Adverb से कोई भी sentence start होगा तो inversion follow करता है, right? I have already explained inversion in the part 3 of 200 rules of English grammar. Please watch that video. In fact, part 1 and part 2 में भी मैंने बहुत सारे बहुत अच्छे rules of English grammar describe किए हैं. Please watch those also. Come on. The next rule says about adverbs कि adverb से कभी भी कोई sentence start होगा तो इन्वर्जन का रूल फॉलो होगा. इन्वर्जन सेज कि हम उसको सेंटेंस को उल्टा कर देते हैं. कम बहुत ही रेयर कोई मूवी वॉच करता था, लेकिन हम सेल्डम ही डिड वॉच अ मूवी नहीं लिखेंगे, सेल्डम ही वॉच्ड अ मूवी नहीं लिखेंगे. इनफैक्ट वी विल इन्वर्ट द सेंटेंस. हम हमेशा वर्ब आगे ले आएंगे और सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे. कैसे? Seldom did he watch a movie. Let's see some other examples. Seldom, if ever, he comes to my home. Seldom, never does he come to my home. Right? This is correct. Seldom or never. Seldom, if ever. Seldom or never means ना के बराबर, बिल्कुल बहुत ही कम, ना के बराबर. Seldom, if ever मतलब अगर कभी वो करता है तो. Right? Seldom or never did he come to my house. Seldom, if ever, he came to my house. He came in his pajamas. Right? अगर वो कभी भी मेरे घर आता है, पहली बात तो आता ही बहुत कम है, लेकिन अगर आता है तो बहुत अपने pajamas में आता है. Right? Now next, look at another example. Little or nothing. Little or nothing means hardly anything. बहुत ही कम, ना के बराबर. Little if everything मतलब अगर थोड़ा बहुत है भी तो उसमें से बहुत कम. Right? For example, I can find little or nothing on this table. मुझे बिल्कुल ना के बराबर कुछ दिख ही नहीं रहा इस टेबल पे तो. I can find little if anything on this table. कि मुझे बहुत ही कम दिख रहा है अगर कुछ दिख भी रहा है तो इस टेबल पे. So this rule says
एडवर्ब से जब भी सेंटेंस बिगिन होगा तो वर्ब पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इन्वर्जन. होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू.